Hello everyone, welcome to MDC Learning, subject Financial Accounting, and our today's topic is issue of debentures. We already discussed the theoretical part on issue of debentures. Now today we are seeing how the debentures are issued at three stages like shares. जैसे आप shares issue करते थे तीन stages में, issued at par, issued at premium, issued at discount. Same way the company is issuing a debentures at par, premium or discount. ठीक है, रिडम्पशन की बात अभी नहीं कर रही हूँ बच्चों, बिकॉज रिडम्पशन इज एन होल टॉपिक, बट टू सॉल्व द रिडम्पशन क्वेश्चन यू मस्ट नो द इशू ऑफ डिबेंचर्स. अगर आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स नहीं आता बच्चों तो आप रिडम्पशन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. सो दैट let us first see the issue of debentures. You know very well about the debentures in 12th standard also. Clear? What is debentures? बोरोड फंड होता है, कंपनी का बोरोड फंड होता है डिबेंचर्स. डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है एज अ सिक्योरिटी. ठीक है, यानी अगर हमारे इंडिया की बात करोगे तो सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही इशू होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू नहीं होते. सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू होने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ कंपनी की सिक्योरिटी उस डिबेंचर होल्डर के पास रहेगी और वो डिबेंचर होल्डर उतनी ही अमाउंट लैंड करेगा कंपनी को. Next one is, say here section 52 of Companies Act 2013 states that the security premium can only be utilized for the following purpose. ठीक है, यानी आपके पास वो जो आप इशू ऑफ शेयर्स करते हो, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स करते हो पार प्रीमियम डिस्काउंट पे, तो जो प्रीमियम पे आपने शेयर इशू किया है दैट प्रीमियम इज यूज्ड for issuing a debenture at par, debentures issued at premium और debentures issued at discount. ठीक है, पार का मतलब आपको पता है. ठीक है, पार का मतलब आपको पता है वो शेयर्स या वो डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और उसको मार्केट में इशू भी 100 रुपीज पे ही किया हमने, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार वैल्यू. ओके, प्रीमियम का मतलब क्या, एक्स्ट्रा वैल्यू पे इशू किया, वो होता है प्रीमियम. सो हियर आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द प्रीमियम पार्ट, क्योंकि मुझे आपको वो प्रीमियम पार्ट के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाना है, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बताना है. क्लियर? चलो जाएंगे, पहले प्रीमियम करते हैं, डिस्काउंट आफ्टरवर्ड्स. सो हियर यू हैव अंडर प्रीमियम the debenture issued at premium. Debentures are said it is to be issued at a premium when the amount collected for it is greater than the nominal value or the face value of debentures. In other terms, like when the issue price is greater than the face value of the debentures, for example, issue of debentures of rupees 1000 for rupees 1200. So rupees 200 being amount of premium. ये 200 रुपया जो है इसको हम लोग ट्रीट करेंगे प्रीमियम वैल्यू के तौर पे, बिकॉज इट इज 200 rupees is more than the value of debentures. Then we have, there are the different journal entries connection with the issue of debentures. issue of debentures करने के लिए हमारे पास जो भी journal entry होगी वो journal entry ये line से आती है. You have to remember that. No doubt students, you already done all these entries in issue of shares. Same way, instead of shares we have to use the word debentures. That's it. On the receipt of application money, obviously first you are going to receive the application money, so you have to write the receipt of application money ka entry, which is in terms of share, you are writing bank account debit to shares account. Here you have to write bank account debit to debentures account. Whatever will be the percentage of debentures, we have to put that percent in the name of debenture. On allotment, the application money on debentures allotted is transferred to debentures account. Then allotment के लिए आपको entry record करना है. After that we have to write the amount due on allotment along with the, after receiving the application money we have to do for the allotment, we have to do the entry for the allotment. Once you convert the application money into the debentures, after that we have to do the allotment entry. For that, on allotment, the application money on debentures is allotted, is transferred to debentures account. Amount due on allotment along with the premium. Usually, as like shares, the premium amount on debentures and shares you are going to receive only with your allotment amount. The allotment amount, allotment का जो भी वैल्यू रहेगा उस allotment की वैल्यू के साथ ही आपको प्रीमियम रिसीव होगा.
receipt of debentures allotment money. After that, we have write a entry due for first call. We have to receive the first call and then final call, if any, or else we have to do the entries like that. Let us see the first question. Question number 1. Obama Limited issued 10,000 10% debentures of 100 each. ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है, 100 रुपए का एक है, 10% ये डिबेंचर का नाम है, एट रुपीज 120. ठीक है, 100 का डिबेंचर्स है, 120 में आ रहा है. दैट मीन्स दिस डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम. हाउ मच इज द प्रीमियम? प्रीमियम ऑफ रुपीज 20. नाउ इट इज रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years. ये बात की बात है, रिडम्पशन की एंट्री हम बाद में करेंगे. विल सी आफ्टरवर्ड्स व्हाट इज रिडम्पशन. रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट, नथिंग एल्स. We'll see in detail in a particular chapter. Here we have to pass entry only for the issue of debenture. Now payable rupees 70 on application and the balance on allotment, that is 30 plus 20. Obviously 30 plus 20 get 50, 50 plus 70 gives you 120 rupees. So 70 rupees we have to receive at a time of application, and 30 plus 20, 30 rupees the allotment value, 20 rupees the premium value we have to received along with the allotment money at a time of allotment. The debentures were fully subscribed and all the money was duly received. Prepare journal. Now we have to pass the journal entry for this. Okay. As we do the journal entries in shares, the same way we have to do the journal entries for our debentures. Debentures के लिए भी same to same करना है. Let us see the entries. So here the first entry will be, you are going to receive the application money. So you have to write bank account debit, bank account debit to 10% debentures application account. Debentures application account. How much is the debentures? It's 10,000 debentures at cost of rupees 70. Application money is 70. ठीक है, application money is 70, and here you have to write the narration as being application money received for for 10,000 debentures. 10,000 debentures of rupees 70 each. Here, now for the debit, the amount will be 10,000 multiplied by 70. It will be 7 lakhs. On the credit side also, that will be 7 lakhs. Now, the next is this application money we have to convert as in debentures. So the next entry we have to write as the debenture application account debentures application account debit, debenture application account debit to debentures account, debentures application
account debit to 10% debentures account to 10% debentures account. Clear? Being application money is converted into debentures. So here you have to write same like shares. जैसे आप shares में करते हो same आपको इसमें भी करना है, सिर्फ shares के बदले debenture word use करना है. Being application money is converted as debentures. Clear? चलो इसका भी अमाउंट कितना लिखना है आपको. Same value. You received the application for 7 lakhs, so you have to write the same value as in 7 lakhs. On the credit side also, the same value of 7 lakhs. Now the next entry we are doing for the allotment due. ठीक है, अगली एंट्री जो आप लिखोगे वो अलॉटमेंट ड्यू की लिखोगे. तो एंट्री विल बी जैसे शेयर का होता था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम वे आपको लिखना है डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कैपिटल. बट उसके साथ हमारे पास और क्या आ रहा है, हमारे पास सिक्योरिटी रिजर्व्स आ रहे हैं. ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है, तो वी हैव टू डू द एंट्री फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो. So first here we are writing debenture allotment account debenture allotment account debenture allotment account debit. How much is the debenture allotment? Open a bracket, write 10,000 shares which is multiply by, आपको कितना आ रहा है 20 रुपीज आपको आ रहा है एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 30 रुपीज आ रहा है एज अ debenture allotment value. So 20 plus 30. Okay, so 10,000 multiply by 50 altogether. तो आपको वैल्यू मिलेगा कितना 5 lakhs. So here it is 5 lakhs. ठीक है, और इसके बाद फिर ये दोनों चीजें आप रिसीव करोगे. पहले क्या, 2 debentures application account. No, it's not application, it's allotment. Debentures allotment account it's 10% debentures allotment. So here we have to specify the percentage. So debentures account and 2 securities premium. Securities premium account. Securities premium account. Okay, this debenture allotment, actually allotment कितना था आपके पास, allotment का value हमारे पास था 30 rupees. So here 10,000 shares multiply by 30 rupees. ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना था, in the bracket 10,000 multiply by 20 rupees. Clear? Bracket close. So for both you have to write the values. Here it is 3 lakhs and the other one is 2 lakhs. By this way we are going to solve the journal entries for issue of debenture. We are going to do the
more problem